बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ट्यूबरक्यूलोसिस और शॉर्टली वे कैन से TB. TB is a highly contagious chronic bacterial infection of lungs. Contagious means that it can be transferred from person to person, either it is direct contact or indirect contact with that person. तो ये हमारे साथ एक बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज है और ये डिजीज लंग्स का है। इसमें लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं। नाउ द कॉजेस ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस. TB is caused by Mycobacterium tuberculosis. So it is caused by bacteria called Mycobacterium tuberculosis. Now replication region. Mycobacterium invade and replicate within the phagosomes. ये phagosomes में replication होते हैं. Phagosome is vacule formed as a result of phagocytosis of alveolar macrophages (WBC) because they are unable to digest bacteria. So mainly ये बैक्टीरिया है इसके replication phagosomes में होते हैं. phagosomes phagocytosis की वजह से प्रोड्यूस होते हैं. सो इसमें इसके replication होते हैं. Now the types of TB. There are mainly two types of TB. Extrapulmonary TB. TB of meninges. That is the meninges is the outer covering of brain or spinal cord, intestines, bones and joints. So these are extrapulmonary TB. And pulmonary TB of lungs is called pulmonary TB. Now the transmission of TB. ट्यूबरक्यूलोसिस ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को. TB ट्रांसफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स. तो ये एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स से ट्रांसफर होते हैं. जब हम स्नीजिंग करते हैं या कपिंग करते हैं उसकी वजह से ये ट्रांसफर होते हैं. नाउ द रिस्क फैक्टर्स ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस. मेन रिस्क फैक्टर्स आर HIV infection, low socio-economic status, alcoholism, homelessness, crowd living condition, and weak immune systems. So these are the risk factor of tuberculosis. Now the symptoms of TB. Main symptoms of TB are loss of weight, loss of appetite, fever, night sweats, coughing, chest pain, and fatigues. So these are the symptoms of TB. Now the treatment of TB. TB specific treatment include several months antibiotics course, use of inexpensive, effective and easy to take drugs, for example isoniazid and rifampin. So mainly isoniazid और rifampin ये TB के मरीज के लिए इस्तेमाल होते हैं. Now the prevention of TB. How TB can be prevented. TB can be prevented by vaccination, for example BCG. ये हमारे साथ वैक्सीन है जो TB के मरीज को लगाते हैं. Isolating patient, improving hygienic condition and housing, using pasteurized and boiled milk. So these are the prevention of TB. So this is all about of our topic tuberculosis TB, which is lower respiratory infectious disease. Thank you.